Good afternoon, everyone. Yesterday, we covered the income method of national income accounting. Today, we will be talking about another method of national income accounting, that is expenditure method. एक बार expenditure method खत्म हो जाए, that would mean that we have finished topic 1 of unit 1. Okay. Expenditure method के अलावा we would also be talking about nominal national income and national income at current prices. Okay, so with that we will be able to finish expenditure method, and then we will be talking about public expenditure or overall expenditure of a particular country. Okay, so okay. So the next method that we will be talking about is known as expenditure method of national income accounting. Expenditure method of national income accounting. So when we talk about the expenditure method of national income accounting, what we find is that in this case, the gross domestic product at market price is measured as a final expenditure, which is done in order to manufacture those goods. Okay, so GDP at market price. So expenditure method is that method. It measures final expenditure it measures final expenditure on gross domestic product on gross domestic product at market price ड्यूरिंग अ करंट अकाउंटिंग ईयर. एक करंट अकाउंटिंग ईयर में जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर, उसे हम लोग इसके जरिए मेजर करते हैं. नाउ what do you mean by final expenditure? Final expenditure means this method is also known as income disposable method or income disposal method. इसको हम लोग other names income disposal method, it is also known as consumption and investment method. Okay, now why it is known as consumption and investment method and income disposal method is because here expenditure basically हम लोग अगर expenditure की बात करते हैं, so expenditure is done for two different purposes. Either we would be consuming or we would be investing. या तो हम लोग फाइनल कंज्यूमर वो उसे कंज्यूम कर देता है, या फिर वो ले जाके द प्रोड्यूसर और द इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने के लिए उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है. नाउ दैट्स द रीजन व्हाई इट इज नोन एज इनकम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड, or it is known as income disposable method. Okay, income disposal method. Income disposal method इसीलिए कहा जाता है because we are essentially disposing of the income that we are earning. We are essentially disposing the income that we are earning, and when we are disposing of the income that we are earning, then the calculation of that, okay, हम लोग income को कैसे dispose of कर रहे हैं या फिर हम लोग इनकम को कैसे यूज अप कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसे हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड कहते हैं. So we are trying to find out as to how the income gets disposed or how the income gets distributed between consumption and investing with in this expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने स्पेंडिंग करी है वो हम लोग देखते हैं. There are two types of consumptions or there are two types of spendings which are done on goods. The one is known as final expenditure, and the second one is known as intermediate expenditure.
दो कंसेप्ट यहाँ पे हमारे इंक्लूड होते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. So expenditure is of two types in this case. First one is, we take into account, the first one can be known as final expenditure, and the second one is known as intermediate expenditure. फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के बीच में यही डिफरेंस है कि फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स जब खरीदे जाते हैं, व्हेन वी बाय द गुड्स, व्हेन गुड्स आर bought for final consumption, then it is final expenditure. On the other hand, when goods are bought for further processing, or resale, then they are intermediate expenditure. Now, determination of this, okay, the good is purchased for final consumption or for intermediate consumption, is a very difficult thing for a particular person for undertaking the national income accounting. I'll give you an example of it. For example, all of you are able to see this watch. Okay, if I buy this watch, it is फाइनल कंजम्पशन और फाइनल एक्सपेंडिचर. वाई? बिकॉज ये मैं खुद यूज करने के लिए खरीद रही हूँ. ओके, सो दिस इज फाइनल कंजम्पशन और फाइनल एक्सपेंडिचर. Okay, this is not an intermediate good. Why? Because यहाँ पे the good is being purchased by the one who is going to use this particular good. On the other hand, when this watch is purchased by someone else who has an intention of reselling it. Okay, कोई एक शॉपकीपर ने ये वॉचेस खरीद के अपने पास रखे, कोई आएगा तो उसे वो बेचेगा ऐसे सोच के उसने अगर वॉचेस खरीदे हैं, so then it is intermediate expenditure. So the purpose of use of that particular good has to be taken into account when you are trying to find out whether it is an intermediate good or a final good. Okay, फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है, वो आप किस बेसिस पे डिटरमाइन करोगे कि वो इंसान ने किस पर्पस के लिए खरीदा है. ફાઇનલ ગુડ અને ઇન્ટરમીડિયેટ ગુડના વચ્ચે એક તફાવત છે કે તમે આ ગુડને શાના માટે પરચેસ કરો છો. ફાઇનલ કન્ઝમ્પશન માટે પરચેસ કરો તો એને ફાઇનલ ગુડ કહેવાય, અને તમે રીસેલ કરવા માટે જે એને પરચેસ કરો છો તો તેને ઇન્ટરમીડિયેટ કન્ઝમ્પશન કહેવાય કે ઇન્ટરમીડિયેટ એક્સપેન્ડિચર કહેવાય. તો આ બંને તફાવતો, આ તફાવત ઓળખવો એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. કેમ કે તમે એ જાણી નથી શકો છો कि एक इंसान जो ये खरीदने आया है. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू अ शॉप. ओके, हम सब लोग दुकान में जाते, 25 किलो चावल अगर लेके आ रहे हैं, बोरी लेके आ रहे हैं, तो हमसे कोई ये नहीं पूछता है कि भाई ये फाइनल कंजम्पशन है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो. हैज एनी शॉपकीपर आस्क्ड यू कि तुम खुद के लिए लेके जा रहे हो कि रीसेल करने के लिए लेके जा रहे हो? नो वन आस्क्स अस दैट. ओके, इन द सेम मैनर हम लोग जब गेहूं खरीदने जाते हैं तो हमसे कोई नहीं पूछता है कि तुम खुद के लिए खरीद रहे हो, घर के लिए खरीद रहे हो कि बेचने के लिए खरीद रहे हो. नो वन आस्क्स दैट. सो ये डिटर्मिनेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है कभी भी जब भी आप फाइनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हो तो. Now let us understand between final goods and intermediate goods. उसका डिफरेंस बिटवीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को 4 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड. ओके, तो इसीलिए हम लोग वो डिफरेंस बिटवीन देखेंगे. उसके बाद वी विल बी मूविंग अहेड अगेन with with how the final expenditure is being classified. Okay, so intermediate good और final good के बीच में हम लोग तफावत देख रहे हैं. अभी तफावत का मतलब डिफरेंस है. ओके,
So difference between final good and intermediate good. ना फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में सबसे पहला डिफरेंस यही है. लेट मी पुट डाउन अ हेडिंग, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड. सो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये जो है, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ओके, दे आर आउटसाइड द बाउंड्री line of production. On the other hand, intermediate goods, they are within the line within the boundary line, or I would be writing boundary line of production. अब इंटरमीडिएट गुड्स जो है, ये लोग ये वाले गुड्स जो है वो बाउंड्री के अंदर में है, प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर में है. क्यों ये प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंदर में है? बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर गोइंग टू बी परचेज्ड, विच आर परचेज्ड ફોર અંડરટેકિંગ ફર્ધર પ્રોસેસીસ. આ ગુડ્સ આના માટે શેના માટે પરચેસ કરવામાં આવ્યા છે? આ ગુડ્સને તમે એટલા માટે પરચેસ કરો છો કે તમે એના ઉપર વધુ પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ કરવા માંગો છો. ઓકે, કે તમે એને વેચવા માંગો છો, या तो फिर आप उसे फिर से बेचना चाहते हो. Either you are buying these products for undertaking production processes further, or you are buying those products in order to undertake resale of these particular products. These are the two reasons why intermediate goods are being purchased. For example, हम लोग कॉटन खरीदते हैं. ओके, कॉटन हम भी खरीदते हैं, कॉटन मैन्युफैक्चर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स भी कॉटन खरीदते हैं. अगर वो फाइनल कंज्यूमर दिया में बाती रखने के लिए अगर वो परचेस कर रहा है, दैट इज दिया में हम लोग बाती लगा के आरती लगाने के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो फाइनल कंजम्पशन हो. ओके, वो फाइनल गुड हुआ. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने अपने लिए खरीदा, घर के लिए खरीदा, उसके उसके अंदर से उसने बातियां बनाई और उसने आरती में रखे और भगवान के सामने दिया जला दिया. ओके, तो फाइनल कंजम्पशन हुआ. ऑन द अदर हैंड, कॉटन खरीदा गया, उसे प्रोसेस किया गया, उसमें से थ्रेड बनाया गया, क्लॉथ बनाया गया, क्लॉथ में से शर्ट बनाया गया, शर्ट में से और उसे पैक किया गया, ब्रांड किया गया, और फिर उसे शॉपकीपर ने खरीदा, शॉपकीपर ने अपने शॉप में लगाया और कंज्यूमर ने उसे खरीदा. ओके, तो इतनी सारी प्रोसेसेस और बीच में हुई है, इसीलिए उसे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें और हुई है उस गुड के ऊपर. तो ऐसे गुड्स जिसके ऊपर उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, तो उसे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं. हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके उसे और यूजफुल बनाते जा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग कि कॉटन जो हमने दिया लगाने के लिए यूज किया वो यूजफुल नहीं है, बट क्लॉथ का डिफरेंट यूज है. ओके, थ्रेड फिर से कहीं ना कहीं पे आप उसे इंटरमीडिएट गुड की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, फाइनल गुड की तरह भी कंसिडर कर सकते हो. अगर थ्रेड में से क्लॉथ बन रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड. अगर थ्रेड को डायरेक्टली क्लॉथ सिलने के लिए यूज किया जा रहा है तो वो फाइनल गुड. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड कि पर्पस क्या है उस गुड का, कि क्यों खरीदा गया है वो गुड को, कौन खरीद रहा है, उसके बाद वो उसके साथ में क्या करने वाला है, वो चीजें आपने डिटरमाइन करनी है एक्सपेंडिचर मेथड में. ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में आपने ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हुए नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करने के लिए आप आगे बढ़ते हो. डिफिकल्ट टास्क, but is possible to be done. Okay. Now, for the value of these goods, of final goods, value of final goods, value of these goods is not added again. Okay, on the other hand, value of these goods are
yet to be added. अब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अभी हमने ऐड नहीं किया बिकॉज हमने उसकी फाइनल वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया. ओके, फाइनल वैल्यू क्यों नहीं डिटरमाइन हुई है? कॉटन कॉटन का खुद का वैल्यू है, नो डाउट अबाउट इट कि कॉटन का वैल्यू है, पर कॉटन में से जब हम लोग थ्रेड बनाते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. थ्रेड में से जब हम लोग क्लॉथ बनाते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. क्लॉथ में से जब हम लोग शर्ट बनाते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. शर्ट को जब हम लोग पैकेज करके उसके ऊपर एक लेबल डाल देते हो तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. ओके, जब हम लोग उसे ही ले जाके एक बड़े से ब्रांडेड स्टोर में रख देते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. ओके, ब्रांडेड स्टोर में से कोई एक नॉर्मल शॉपकीपर जाके खरीदता है तो उसकी वैल्यू फिर से अलग हो जाती है. So it is all dependent on the various factors which play a role in determining the value of a particular product. तो ये नहीं है कि ये जो गुड आपने खरीदा है या फिर ये जो गुड बना है वो उसकी वैल्यू फाइनल है. वैल्यू ऑफ द गुड चेंजेस इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड, उसकी वैल्यू अभी तक पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं हुई. Every time a process is undertaken, every time a production activity is undertaken, the value of the good changes, the value of the good alters, it improve, it might deteriorate. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मिल्क बना रहे हैं, मिल्क में से बटर निकाल देते हैं और बटर मिल्क हम लोग लेते हैं, तो मिल्क की वैल्यू अलग है, बटर की वैल्यू अलग है, बटर मिल्क की वैल्यू अलग है. इट्स नॉट लाइक कि बटर की जो वैल्यू है वही बटर मिल्क की भी वैल्यू रहती है. Okay, it is a slightly a sub product of a particular production process, उसकी वैल्यू अलग से रहती है और बटर की वैल्यू अलग से रहती है. So it all is dependent on what are the different production activities that are undertaken and how the product is getting used by the different producers who are undertaking production processes on these foods. Then the uh, the third reason or the third difference between is these foods are ready to use. Okay, they are ready to use and consume. Okay, final goods are ready to use and consume. On the other hand, intermediate goods are used as raw material. They are used as raw material for undertaking further production processes. फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस करने के लिए हम लोग उन्हें रॉ मटेरियल की तरह इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड फाइनल गुड्स पूरी तरह से रेडी है फाइनली कंज्यूम करने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पानी खरीदते हैं, मिनरल वाटर. ओके, बॉटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो फाइनल गुड है. जब वो पानी पहली बार प्लांट में, डिस्टिलेशन प्लांट में जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड. ओके, उसके अंदर सब कुछ डिस्टिलेशन किया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट फूड्स. द वाटर इन दैट केस इज इंटरमीडिएट फूड. वाटर दैट कम्स इनटू आवर हाउस इज अ फाइनल फूड. ओके, हमारे घर में जो हम लोग नल में से पानी भरते हैं और पी लेते हैं उसे हम लोग फाइनल गुड मान सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू अंडरटेक एनी टाइप ऑफ अदर प्रोसेसेस. भले ही हमने प्यूरिफायर यूज करके उसे प्यूरिफाई किया है पर हम हमारे कंजम्पशन के लिए उसे यूज कर रहे हैं. आरओ प्लांट में से वाटर पास करके वी आर नॉट फिलिंग इट अप इन बॉटल्स एंड वी आर नॉट सेलिंग इट आउट इन द मार्केट. ओके, अगर हम लोग वही काम कर रहे हैं कि हमने हमारे आरओ प्लांट में से वाटर को प्यूरिफाई किया और उसमें से हम लोग बॉटल्स में भर के उसे अगर हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं, देन इट इज अ इंटरमीडिएट फूड फॉर अस. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज क्लासिफाइड एज एन इंटरमीडिएट फूड और अ फाइनल फूड. ओके, फाइनल फूड हम कंज्यूम करने के लिए, जो बना रहा है वही कंज्यूम कर लेता है, उसे हम लोग फाइनल फूड कहते हैं. अगर हम उसे आगे बेचने के लिए भर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट फूड कहलाया जाएगा. देन final goods result in either final consumption or investment. Okay, the result of such final goods is basically investment or final consumption. Result is equal to final consumption or investment. In case of intermediate good, the result is
consumption by producers consumption by producers and further processing. ओके, कंजम्पशन बाय फाइनल प्रोड्यूसर्स एंड फर्दर प्रोसेसिंग उसमें की जाती है जब भी हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं। तो रिजल्ट दोनों का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इंटरमीडिएट फूड्स में हम लोग आगे उसके ऊपर और प्रोसेसेस करने वाले हैं, हम लोग उसी के लिए वो गुड को खरीद रहे हैं। फाइनल कंजम्पशन के लिए जब हम लोग गुड खरीदते हैं या फाइनल इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं उसे हम लोग फाइनल कंजम्पशन कहते हैं या फाइनल गुड्स कहते हैं। These goods are included in the estimation of national income, that is जो भी फाइनल goods है उसे हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेशन में डाल देते हैं। included in national income estimation, not included as still further processes have to be undertaken on these particular goods. For example, wheat जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। कैसे वो फाइनल गुड हो सकता है? अगर कंज्यूमर खुद व्हीट खरीद लेता है तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो फाइनल गुड है। बट ऑन द अदर हैंड फ्लोर मिल जब व्हीट खरीदता है वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है। कंज्यूमर भी उसमें से आटा ही बनाने वाला है, फ्लोर मिल भी उसमें से आटा ही बनाने वाला है, दोनों का काम वही है कि आटा को पीस के उसमें से आटा सॉरी गेहूं को पीस के उसमें से आटा ही बनने वाला है। बट consumer is going to buy the wheat in order to prepare flour for his own consumption. On the other hand, the flour mill is going to buy the wheat in order to prepare the flour for रीसेलिंग द फ्लोर। ओके, तो वहां पे वो डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मैंने वो गुड को खरीदा है एज अ कंज्यूमर, दैट इज मैंने अगर गेहूं खरीदे हैं, इफ आई हैव बॉट व्हीट फॉर माय ओन कंजम्पशन, देन व्हाटएवर आई पे, ओके, मैंने जो पेमेंट करी है उसे हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड कर देंगे। So the price at which I buy the wheat is considered or included in the national income estimation. Yeah, Soumya? Soumya, any doubt? ओके, इफ आई हैव बॉट व्हीट फॉर माय ओन कंजम्पशन, जिस प्राइस में मैंने व्हीट खरीदा है उसे मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड कर दूंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर फ्लोर मिल ने व्हीट खरीदा है तो वो व्हीट को मैं ऐड नहीं करूंगी। वाई? बिकॉज उसमें से वो आटा बनाने वाला है और वो तब आटे की वैल्यू जिसपे वो बेचेगा उसे मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड करूंगी। ओके, फर्दर एक और चीज है, अब आटा हमने खरीदा है नॉर्मल कंज्यूमर की तरह तो वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में चला जाएगा। बट अगर रेस्टोरेंट ने खरीदा है या फिर ब्रेड मैन्युफैक्चरर ने वो आटे को खरीदा है तब वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं जाएगा, बिकॉज स्टिल इट इज एन इंटरमीडिएट गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इफ आई एज अ कंज्यूमर बाय व्हीट, that is included in national income accounting. If I, as a consumer, have bought the flour, then it is included in national income accounting. But if the wheat is purchased by the flour mill, it is not included in the national income accounting. It is if the wheat flour has been sold to a restaurant, then it is not included in the national income accounting because अभी भी वो intermediate good ही है, उसके ऊपर और production किया जाएगा और processes किए जाएंगे। सो ये डिटर्मिनेशन की कब हम उसे इंटरमीडिएट गुड मानेंगे, कब उसे हम लोग फाइनल गुड मानेंगे, ये डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द एस्टिमेटर्स व्हाइल दे आर अंडरटेकिंग एस्टिमेशन यूजिंग द नेशनल इनकम अकाउंटिंग अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर्स को हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर और डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर्स हमने देखे हैं उससे हम लोग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड इज द फाइनल एक्सपेंडिचर। सो लेट्स डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल एक्सपेंडिचर। ओके, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर डिफाइन करेंगे और फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स देखेंगे और बाद में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड कैसे उसमें क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं। Soumya, do you have any doubt? If you don't have a doubt, please put your hand down so that
we can proceed further. Okay, I think so. I'll myself put this hand. Okay. So, final expenditure, by the name itself suggests, is the expenditure which is done in a particular accounting year. Okay, फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में रखे गए हैं या किया गया है उसे हम लोग फाइनल इनकम फाइनल अकाउंट सॉरी फाइनल एक्सपेंडिचर कहेंगे. फाइनल एक्सपेंडिचर is equal to expenditure on final goods expenditure on final goods and services in an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमने लगाया है उसे हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं. फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ओके, फाइनल एक्सपेंडिचर is equal to GDP at market price. Okay, GDP at market price is basically the final expenditure that has been undertaken in a particular given accounting year. The main problem is to find out whether the particular consumption or particular expenditure, like I have already said, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कि मैं कैसे डिटरमाइन करूँ कि ये भाई ये वाला फाइनल एक्सपेंडिचर है और ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. हाउ डू आई डिटरमाइन इट? इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डिटरमाइन कि कौन सा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है कौन सा फाइनल एक्सपेंडिचर है. बिकॉज मैं हर इंसान से नहीं पूछूंगी कि भाई ये फाइनल एक्सपेंडिचर था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए था. एंड इफ इवन इफ इट माइट बी पॉसिबल कि किसी ने कहा है कि नहीं ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, उसके बाद उसने थोड़ा गुड अपने लिए रिटेन किया हो सकता है. इट माइट बी पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 200 किलो चावल लेके जा रहे हैं. ओके, रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसमें हम लोग 200 किलो चावल लेके जा रहे हैं. अब ये जरूरी नहीं है कि 200 के 200 किलो मैं रेस्टोरेंट में ही लगा दूंगी. इट माइट बी पॉसिबल उसमें से मेरे घर में जरूरत पड़ी तो मैंने 5 किलो चावल वहां से उठा ली. ओके, तब ये 5 किलो का अकाउंटिंग कौन करेगा? ओके, 5 kilos of rice which has been taken by me has been taken as a final consumption of me. मैंने उसे फाइनल कंजम्पशन की तरह यूज कर लिया है. अब ये तो मैं किसी को बताने नहीं जाऊंगी कि भाई ये 5 किलो जो है वो मैंने फाइनल कंजम्पशन में यूज कर लिया तो उसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डाल दो. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं. सो देर आर लूप होल्स इन द एक्सपेंडिचर मेथड बिकॉज एक्यूरेटली ये डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि जिसने खरीदा है वो गुड को कैसे यूज करने वाला है. एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है बट एक्यूरेटली आप ये नहीं कह सकते कि एक्चुअली ये गुड उसी के लिए यूज हुआ. Okay, so it is a difficult task to be undertaken. If goods are purchased for resale or as raw material, then it is intermediate consumption. ये मैंने आपको already बताया. If goods and services are purchased for final consumption or for capital formation is also known as investment. Okay, final expenditure का मतलब है, sorry, final expenditure means goods are purchased for final consumption or capital formation. अगर गुड्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिए खरीदे गए हैं या फिर फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदे गए हैं तब हम उसे हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट मान लेते हैं. बट अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए खरीदे गए तो उसे हम लोग इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर करते हैं. इन इंडिया दिस मेथड इज यूज्ड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इनकम इन सेकेंडरी सेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चरल है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो इंडिया में स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर जहाँ पे प्रोसेसेस किए जाते हैं उस सेक्टर में इस एक्सपेंडिचर मेथड को यूज किया जाता है. बिकॉज एवरी टाइम अ गुड इज बीइंग परचेज्ड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और यू कैन
somewhat determine, आई एम नॉट सेइंग एक्यूरेटली डिटरमाइन, बट कहीं ना कहीं पे एक अंदाजा आ जाता है कि ये गुड को ये इंसान किस लिए खरीद रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन तक जाने तक उस गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं फाइनल प्रोडक्शन प्रोसेस के। ये वैल्यू एडिशन मेथड हम लोग इसीलिए नहीं यूज करते क्योंकि कितने प्रोडक्शन प्रोसेसेस के स्टेजेस है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू बी डिटरमाइन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइनल गुड तक जाते जाते जब तक कि वो कंज्यूमर के हाथ में गुड ना आ जाए तब तक हम जीडीपी की वैल्यू नहीं निकालते। ओके, गुड मार्केट में आके कंज्यूमर के हाथ में बेचने के लिए ना आए तब तक हम वहां पे जीडीपी की कैलकुलेशन में उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, मार्केट में गुड आ जाए हम उसे जीडीपी की वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। So classification of final expenditure is done in four different parts. Okay, हम लोग चार different parts में फाइनल कंजम्पशन या फाइनल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर सकते हैं। फाइनल expenditure is divided into four parts. The first part, the first part that we have is known as private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है दिस इज एन एक्सपेंडिचर विच इज डन ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होते हैं? इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स हम आप जैसे लोग। देन वी हैव हाउसहोल्ड्स, दैट मीन्स हमारे घरों में जितनी भी चीजें आती है। एंड एनजीओस सर्विंग द सोसाइटी। ओके, NGOs serving the society. Why NGOs को include किया गया? Because they are not going to undertake production processes on them. उनका सिर्फ पर्पस यही है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इंडिविजुअल्स, दैट इज हम जैसे लोग, that is going to be included in final private final consumption expenditure. Then households, हम सबके घरों में, दैट इज फैमिली एंटिटीज जितने भी कंजम्पशन गुड्स यूज करते हैं उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और उसके अलावा एनजीओ को इंक्लूड किया जाता है, एनजीओ बिकॉज दे आर सर्विंग द सोसाइटी। तो ये तीन के द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते આ ત્રણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ થી જે પણ એક્સપેન્ડિચર કરવામાં આવે છે એને તમે પ્રાઇવેટ ફાઇનલ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચરમાં રાખો છો। ઓકે, private final consumption expenditure. For example, if a question is asked you, which among the following is not included in the private final consumption expenditure according to the expenditure method? तो आपने ये तीनों को इसीलिए याद रखना है क्योंकि चौथे को आपने इंक्लूड नहीं करना। ओके, चौथा उसमें कुछ नहीं है, तीन ही चीजें इंक्लूड की जाती है। ओके, तो आपने ऑड वन नॉट पिक करना है उस केस में। देन कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द सेकेंड वन, गवर्नमेंट final consumption expenditure. Government final consumption expenditure is basically final consumption or final goods, sorry, expenses which are made by the government for final consumption of the government itself. Okay, government खुद की consumption के लिए goods खरीद रहा है. In that case, it is known as government final consumption expenditure. This is denoted, this one, private final consumption expenditure is denoted by C. Government final consumption expenditure is denoted by G. Okay, government final consumption expenditure is spending of the government on final goods and services by the government for consumption by the government. For example, consumption by
डिफेंस पर्सनल्स। सो डिफेंस पर्सनल्स तक जो भी चीजें पहुंचाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड, ओके, देन आफ्टर क्लोथ्स, देन आफ्टर मेनी अदर थिंग्स विच आर बीइंग सप्लाइड टू द डिफेंस पर्सनल, वो गवर्नमेंट का खर्चा है खुद का। ओके, गवर्नमेंट क्यों ये खर्चा कर रही है? इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा, हमारी सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सोल्जर्स लगे हुए हैं, उन लोगों को ये सारे गुड्स इसीलिए पहुंचाया जाता है बिकॉज दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड आर इंटरेस्ट। ओके, हमारे लिए वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसे हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करते हैं। अब ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों है? फाइनली who is consuming the goods? Someone who is working for the government of India. Okay, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है वो ही वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग ये एज्यूम कर देते हैं कि गवर्नमेंट खुद उसे कंज्यूम कर रहा है। ओके, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। These soldiers are not going to use these goods in order to manufacture something on the border. Okay, वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये गुड्स कौन खरीद के दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद के दे रहा है। क्यों खरीद के दे रहा है? क्योंकि वो सोल्जर्स वहां पे हमारे लिए सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सो इन दैट केसेस इट इज नोन एज कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट की फाइनल कंजम्पशन। अगेन फॉर एग्जाम्पल, purchase of a defense equipment by the government of India is also government final consumption expenditure. यहाँ पे उस गुड को या फिर उस डिफेंस इक्विपमेंट या फिर मिसाइल को लेके और कुछ बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। ओके, नथिंग इज गोइंग टू बी एडेड इन इट, नथिंग इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। ओके, वो जैसा है वैसा ही रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तब गवर्नमेंट उसे यूज करेगी। तो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, ऑल ऑफ दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहां पे फाइनली जब जरूरत होगी गवर्नमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए हमारे देश को, तब वो उन गुड्स को यूज करेंगे। ओके, उसके पहले नहीं यूज करने वाले, बट उन्होंने स्पेंडिंग करी है ताकि उसके ऊपर वो लोग जब जरूरत पड़े तब उसे फाइनली यूज करें। ओके, उसके ऊपर और कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करने की जरूरत है, इसीलिए वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? टिल सो फार इज इट क्लियर? Great. So let's proceed further to the third aspect of final consumption expenditure or final expenditure, that is investment expenditure. Investment expenditure is denoted by I, capital I. Okay, यहाँ पे जो चीजें की जा रही है वो इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से की जा रही है। ओके, यहाँ पे हम लोग फाइनल गुड्स, दिस रिफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द कंज्यूमर, बाय द प्रोड्यूसर। Final goods by the producer. Here, what I am saying, final goods by the consumption is private final consumption expenditure. Private final goods purchased by the government is government final consumption expenditure. But when a firm purchases final goods, okay, जब एक firm જ્યારે એક firm કે એક ફોર્મ જ્યારે ગુડ્સ ને ખરીદી કરે છે ફાઇનલ કન્ઝમ્પશન માટે, એને તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્સપેન્ડિચર રીતે ઓળખો છો. Whenever a good is being purchased by the firm for undertaking final consumption, it is known as investment expenditure. क्यों उसे investment expenditure की तरह रखा जा रहा है? Because these would be used by the particular producer in order to aid the production processes. वो directly शायद से involved नहीं होंगे वो वाले goods production processes के लिए, but फाइनल कंजम्पशन के लिए उनको हेल्प आउट करते हैं। फाइनल गुड्स की या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की प्रोडक्शन में उनको हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फील्ड को प्लाव कर रहे हो, अगर आप खेती कर रहे हो और वहां पे हल जोत के भी आप खेती कर सकते हो, ट्रैक्टर यूज करके भी आप खेती कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक आपने अगर आपके पास बैल नहीं है तो आप हल भी नहीं चलाओगे, आप सीधा हाथों से पूरा प्लाउइंग भी कर सकते हो। ओके, यू हैव थ्री ऑप्शंस व्हेन यू आर टिलिंग द फील्ड। ओके, टिलिंग द फील्ड का मतलब आप जोत रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड को। आपके पास तीन ऑप्शन है, हाथ से कर दो, कैटल यूज करो या फिर ट्रैक्टर खरीदो।
अगर किसी फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है, it is not directly aiding the production of the particular food grain that he is trying to produce. फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है। हम फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग हल जोतने की बात कर रहे हैं, खेत को जोतने की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाउइंग ऑफ द फील्ड। ओके, हम लोग हाथ से करेंगे तो भी वहां पे हम लोग सीड डालेंगे तो क्रॉप्स उगेंगे, अगर हमने अच्छे से उसकी मेंटेनेंस की है तो। हम जब कैटल यूज करके उसे प्लाउ करेंगे तब भी सीड्स डालेंगे और मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो वैसे ही क्रॉप्स उगेंगे। अगर हम लोग ट्रैक्टर यूज करके भी कर रहे हैं तो और हमने सीड्स डाले हैं तब भी वैसी ही प्रोसेसेस होगी। कोई क्रॉप अलग तरह से उगने वाला है ऐसा कुछ नहीं। ओके, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीड दैट यू आर यूजिंग। But when the farmer uses tractors in order to plow the field, it is an investment expenditure that he has undertaken. अगर उसने ट्रैक्टर खेत को प्लाउ करने के लिए खरीदा है तो वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे एड कर रहा है ये। Okay, it is a aiding activity which is there for the production process which has been undertaken by this person. कैसे एड कर रहा है? अगर आप हाथ से प्लो करोगे तो आपको शायद से 15 दिन लगेंगे। ओके, अगर आप कैटल यूज करोगे तो आपको 5 दिन लगेंगे, अगर आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो तो आपको 1 दिन लगेगा। ओके, सो आपने अपना टाइम बचाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट करी। ओके, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज। डायरेक्टली इसका कोई इम्पैक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस पे नहीं होता है, बट आप ये इसीलिए यूज करते हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक द प्रोडक्शन प्रोसेस मच मोर सिंपलर देन इट ऑलरेडी इज। ओके, आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्पीडी कर रहे हो या फिर सिंपल कर रहे हो या फिर आप उसे ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हो। So in this manner, when investment expenditure is done in order to help the production of final goods, then it is known as an investment expenditure. Okay, so expenditure on purchase of final goods, it is expenditure on purchase of final goods by a producer. अब दो ऑप्शन है, ठीक है। ट्रैक्टर मैंने खेत के लिए खरीदा, इट इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ट्रैक्टर मैंने सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए यूज किया, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ट्रैक्टर मैंने अपने ट्रांसपोर्ट के लिए खरीदा, इट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ओके, अब पर्पस बदल गए हैं। देखिए आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, तीनों फाइनल एक्सपेंडिचर्स है। ओके, तीनों जगह पे ट्रैक्टर इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द एंड कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे तीनों जगह पे ट्रैक्टर से कुछ ज्यादा मुझे एडिशनल बेनिफिट नहीं दिख रहा है। एक एक तो ये है कि खेत का प्लाविंग बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरी जगह पे मैं गुड्स को बहुत ही इफेक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, तीसरी जगह पे मैं खुद अपने लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीद रही हूँ। तीनों फाइनल कंजम्पशन है। ओके, बट पर्पस तीनों का अलग अलग है। ओके, एक जगह पे उसे मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में डाला और दो जगह पे मैंने उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में डाला। ओके, so that has to be taken into account. These goods are to be further used in process of production. फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेसेस में इनको यूज किया जाता है पर उनका डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं दिखता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने दो मशीन अगर खरीदा है। ओके, अगर मैंने कोई मशीन अगर मैं क्रॉप्स को जब फाइनली क्रॉप्स बन जाते हैं तो सीड्स को क्रॉप से अलग करने होते हैं, तो उसके लिए मैं हाथ से भी कर सकती हूँ, जमीन पे उसे पटक पटक के भी मैं अलग कर सकती हूँ, या फिर उसे मशीन में डाल दूंगी तो आराम से वो अलग हो जाते हैं। तो ये मशीन जो मैंने खरीदी है वो मैंने टाइम बचाने के लिए खरीदी। ऑन द अदर हैंड जो मैं हाथ से नीचे पटक के डाल रही हूँ और वहां से सीड्स अलग होंगे, फिर उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, फिर उन्हें साफ किया जाएगा, वो सारी जो प्रोसेस करने की कोशिश की जाती है, उन सब केसेस में व्हाट हैपेंस इज द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अ बिट स्लोअर। ऑन द अदर हैंड मशीन यूज करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंपैरेटिवली आपका क्विकर रहता है। तो क्विकर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में डाला जाएगा। अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए किया है तो सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में डाला जाएगा।
एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है, सॉरी, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स. ओके, ई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस एम. अगर हम लोग इसे और आसानी से देखें, एक्स माइनस एम, एक्स स्टैंड्स फॉर exports, M stands for imports. Net exports refers to the difference between exports and imports during a particular year. Exports are expenditure by foreigners on domestically produced final goods and services produced abroad. So exports का मतलब है कि हमारे goods दूसरी countries में जा रहे हैं, उसे हम लोग export कहते हैं. उनके गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो उसे हम लोग इंपोर्ट कहते हैं. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हम लोग वहां पे इंक्लूड करेंगे फाइनल एक्सपेंडिचर में. ओके, फाइनल एक्सपेंडिचर में ये चीजें इंक्लूड की जाती हैं. कल के लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक हम लोग कैसे जाते हैं इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. एंड वी आल्सो वुड बी टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशंस दैट हैव टू बी टेकन यूजिंग while using the expenditure method. I hope so far it is clear to you people as to how the what are the factors that have to be considered in case of this method. Can I get a confirmation so far that you have understood what have been taught? This is zero. Just give me 1 minute. I'm sharing the attendance passport for today.